The RTX 4090 is rumored to have a peak power draw of 800 watts. For context, the 3090 Ti is only 450 watts. Intel ka 12900K goes up to 270 watts on full load. And leaked specs ke mutabik, 13900K will take up to 300 watts. Now as hardware is progressing, so is the power consumption. This really begs the question कि आपका 850 watt वाला PSU काफी रहेगा या नहीं future upgrades के लिए. Keep watching to find out. Even something like a 4070 is expected to start drawing 420 watts now. Now logically speaking, if you're one of those people who upgrades every 1 or 2 years, yeah, 1 or 2 generations in fact, the 850 watt PSU that you bought 3-4 years ago will basically be kind of useless now. मेरे को भी नया लेना पड़ेगा यो power supply. मेरे पास भी 750 है. The solution is to normalize a 1000 watt plus PSU. We agree, ये महंगा हो सकता है. But since you're getting better performance than 1390, एक 4070 के साथ, at its regular price, assuming price नहीं बढ़े और ये 60,000 के आसपास हो, it makes sense to invest in a good PSU for future upgrades. Cue in XPG Cybercore. We have two variants here with us: the Cybercore XPG 1000 watt supply and the 1300 watt supply. You could say they are the future of standard PSUs. क्योंकि ये 80+ Platinum है, power conversion काफी efficient रहने वाला है. Check out our video on power supplies. Okay, to sum it up, your power supply is actually an AC to DC power converter, and due to simple laws of physics, not all power coming through the socket can be converted. So 80+ rating simply depend the efficiency of this conversion. और इसे ठंडा रखने के लिए 120 mm fan, NVIDIA fan with dual ball bearing. This keeps the PSU noise levels down. It's not a common feature in PSUs, but it should be. The PSU will come with 10 years of warranty, so basically you last at least 2-4 generations of hardware upgrades. हम लोग खोल नहीं रहे पावर सप्लाई, नहीं मतलब एक्चुअल खोल के बोल रहा हूँ. यहाँ अभी मैं खोलता हूँ उसको. देना स्क्रूड्राइवर दे, भी खोल देता हूँ मैं कैमरे पे. Yeah, got this. This is correct. इसको बोलते हैं genuine unboxing. MoosaBhai.com. Oh, you guys know I have a blog, MoosaBhai.com. Read, please. Link in the description. Oh, wow, bro. Bro, देख रहा है इसको? 25,000 का पावर सप्लाई ऐसे दिखता है दोस्तों. तो ये है वो नाइडेक का फैन. ये क्यों डाला होगा पता है? मस्ट डस्ट भी हो सकता है, और अगर जो ये केबल वगैरह है, यहाँ पे केबल्स है, उसमें अगर आगे पीछे हुआ केबल तो फैन में नहीं घुसेगा. सो पहला थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस इज डोंट ट्राई दिस एट होम. पहले तो ये वारंटी वॉइड हो रही है, ऑब्वियसली वारंटी वॉइड हो रही है. उसके अलावा अगर कनेक्टेड कंडीशन में आप ये करोगे, दिस कैन बी डेंजरस. सो ह्यूज डिस्क्लेमर देयर, डू नॉट डू इट. आई क्विकली ओवरव्यू बता देता हूँ जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस ह्यूज, these cylindrical things you see everywhere are actually capacitors which they store charge. Now ये एरिया में नीचे बोर्ड है. बोर्ड के साथ साथ यू कैन सी इसके दूसरे सिस्टम्स जो होंगे, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, हीट थर्मल प्रोटेक्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो चीज़ें हैं. यू कैन एक्चुअली सी ऑन द बिग कैपेसिटर इट्स रेटेड 105 डिग्री सेंटीग्रेड. गुड थिंग इट हैज़ अ फैन, सो इट प्रॉब्ली नेवर हिट दैट. दूसरी चीज़ ये है कि ये सारे बड़े बड़े हीट सिंक्स, this is a heat sink, this is a heat sink. This is the next power delivery circuit over here. We'll try to show that in other shots also. And this daughter PCB over here houses all these connectors. So basically this power is coming through the main board, getting stored here, then getting delivered to this board, and then finally this one. And the plastics you see everywhere are mostly for shielding, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. जहाँ जहाँ नहीं होना चाहिए नहीं होगा. यही होता है पावर सप्लाई. द न्यू अपग्रेड्स कमिंग फ्रॉम ऑल ब्रांड्स will be power hungry, but if you're a budget gamer, this probably doesn't apply to you. But if you're the kind of person who wants to be on the latest and greatest, this capacity of power supply is actually intelligent. अच्छी बात, ले सकते हो आप. Also, people worried about the ATX 3.0 standard. It will also have connector cables, so it doesn't matter. This is going to work perfectly well with that. So yeah, probably time to start buying higher end power supplies for people who want higher end systems. So hope you liked watching that video, and yes, do subscribe, like और वो सब कर लेना लाइफ में. Yeah, एक बार editor please show the screenshot of people watching who are not subscribed. Thank you for watching. Cheers. Stay tuned.